Prabhu Nitya Hare Krishna. Not from Prabhu. Yeah, very possible. Hare Krishna. Prabhuji. Thank you, Prabhuji. You're very, very Prabhuji. Very grateful to you, Prabhu. No, for a long time we are meeting. Prabhu, still you are in Govardhan, Prabhuji, or you came yes, Prabhu. Today I am sitting in Govardhan. I am sitting. Yesterday I came here from Chennai. Okay. 1 month I was there in Tamil Nadu. I was sitting there and giving these Bhakti Sastri classes actually regularly. And yesterday I came here, Prabhu. How are you, Prabhu? Good, Prabhuji. Hope and pray, Prabhu, you are keeping good health, Prabhuji. Health is good. Fine. Health is very nice. No problem. Krishna's mercy. Very fortunate, Prabhu, once I have your association, Prabhuji, from Shridhar Vardhanji. And share this wonderful pastime of Lordship from your lotus mouth, Prabhuji. It's always a great pleasure for all of us. We are very, very fortunate. How all the devotees are doing, Prabhu?
Yeah, Prabhu, by the grace of Lordship and the mercy of Vaishnavas like you, Prabhu, everybody is all right, Prabhuji. Very good, We very good. some devotee had actually, like the Okay. corona, this thing, but now overall everybody is okay, Prabhuji. Okay. Now gradually the preaching is picking up, Prabhu. Yes, but now, Prabhu, last 2 years we have stopped everything. Okay. Online was going on. Offline. In between, we started for 1 month, but again the number increased, so again we have stopped everything. Okay. So now everything only. So no visiting and no hall programs. It's only online Prabhuji going on. Yeah, it's boring. Yes, Prasadam, Prabhuji. nothing. We are bereft of association of devotees like you, Prabhuji, and also not getting. Yeah. Hope Krishna will change. And so that's really this part, Prabhuji. We're really dismissing this part. Yeah. Yes, Prabhuji. तो हम सभी मिलके करेंगे. हाँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे समक्ष श्रीमान कृष्ण प्रभु जी का हमको संग प्राप्त होगा. और प्रभु जी समय श्री धाम गोवर्धन में है, वृंदावन धाम के पास में गोवर्धन में, और वहां से अपना संग हम सबको दे रहे हैं. In spite of his busy schedule, he is devoting his time for all of us to enlighten all of us on this wonderful occasion of Varaha Dvadasi. So let's all together, we'll welcome Prabhuji. In the past also we had been so much, we had so much fortune actually that we had got his association in the past. और हम सब प्रभु से परिचित हैं. प्रभु जी का संग हम कई बार प्राप्त कर चुके हैं, यात्रा में भी, और वृंदावन यहाँ पर कन्यादेश धाम में प्रभु जी कई बार आ चुके हैं. और शुरुआत से हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रभु जी, शुरुआत में जब यहाँ पर प्रचार होता तब से. And we all have been very nicely taken care of under his guidance and his wonderful instructions. So we look forward प्रभु जी सूचना again. And now अभी हम सब मिलकर के प्रभु जी का स्वागत करेंगे और फिर श्रवण करेंगे. तो हरे कृष्ण महामंत्र का आशीर्वाद देते हुए प्रभु जी का स्वागत करते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री वराह द्वादशी महोत्सव की जय, शिल्प पाद की जय. Yes, Prabhuji. Over to you, Prabhu, please. Yeah, so we can start now. Okay. Om Jnana Timrandasya Jnananjana Salakaya Saksul Mulidam Yena Dasmai Sri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budare Srimare Bhakti Vikasa Swamini Namane Namaste. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budare Srimare Bhakti Vedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Bhashatya Desadarani. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble obeisances and heartfelt welcome to all the devotees present here. तो सबसे पहले मैं सभी उपस्थित भक्तों को प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में. In this today's session, we are going to speak and discuss about the activities and pastimes of Lord Varaha Dev. और आज के इस सत्र में हम लोग श्री वराह देव भगवान के कार्यकलापों और उनके प्राकट्य के बारे में श्रवण करेंगे. We know the theology, Vaishnava theology, that the transcendental forms of the Supreme Lord present in the spiritual world appear within the realm of this material creation for different purposes. तो जैसे हम सब सिद्धांत जानते हैं कि भगवान जो है विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं, भगवान जहां जहां उनकी सृष्टि हुई है अलग अलग कार्यकलापों के लिए. So Krishna, the Supreme Lord, incarnated within this material world many times, and we know that he incarnated actually innumerable number of times. And one of the important incarnation of the Supreme Lord is known as Varaha Dev incarnation. तो भगवान के असंख्य अवतार बताए गए हैं शास्त्रों में. असंख्य रूप में भगवान अवतरित होते हैं, और उनमें से एक प्रमुख रूप जो भगवान का है वो है वराह रूप. वराह रूप में भगवान अवतरित होते हैं. So the pastimes of the Supreme Lord Varaha Dev had been narrated beautifully by Maitreya Rishi to devotee Vidura in the third canto of Srimad Bhagavatam. तो भगवान वराह देव की जो कथा है उसको श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में
मैत्रेय मुनि के द्वारा विदुर जी को सुनाई जा रही है। So in the third canto of Srimad Bhagavatam, the discussion was going on between Udara and Maitreya Rishi about the activities of Swayambhu Manu. तो तृतीय स्कंद में, भागवतम के तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद चल रहा है मनु के बारे में। So Maitreya Rishi was asked by Udara about the activities of Swayambhu Manu. What Swayambhu Manu did after he got married with Sadarupa. तो उन्होंने प्रश्न किया विदुर ने मैत्रेय मुनि से कि स्वयंभू मनु जब उनका विवाह हो गया शतरूपा से, तो उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? Then the answer was given like that. Swayambhu Manu was ordered by his father, Lord Brahma, to create as much as population as possible. तो अपने पिता और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार मनु जो हैं, उनको यह आज्ञा थी कि आप जितनी प्रोजनी आप उत्पन्न कर सकते हैं उतना प्रोजनी आप उत्पन्न करिए। Then Swayambhu Manu asked by Lord Brahma that he first wanted a place for settlement and creation of population, but the earthly planet, which provides all kind of facilities for staying, had been drawn within the Garbho ocean in that particular time. तो उस समय स्वयंभू मनु ने कहा ब्रह्मा जी से, देखिए आपने जो मुझे कार्यकलाप दिए उसके लिए पहले मुझे कहीं पर व्यवस्थित होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे भूमि की आवश्यकता है, लेकिन जहां पर मैं ये प्रोजनी को उत्पन्न कर सकूं। लेकिन अभी तो मैं श्रवण कर रहा हूं कि जो भूमि है वो तो गर्भोदक जो सागर है उसके अंदर बिल्कुल जाके लुप्त हो चुकी है। So Lord Brahma understood the situation, precarious situation of the Brahmanda, especially the earthly planet, and then he started thinking how this earthly planet can be rescued from the bottom of the Garbho ocean. और तब ब्रह्मा जी को स्थिति का ये आकलन हुआ कि किस प्रकार से पृथ्वी माता जो है वो लुप्त हुई है इस समय गर्भोदक सागर के बीच में, और कैसे उनको निकालने का उपाय उसके बारे में वो चिंतन कर रहे थे। In spite of his thoughtful thinking and thoughtful planning, he didn't know how to rescue the earth from the Garbho ocean. लेकिन चिंतन मनन करने के पश्चात भी उनको कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था कि कैसे इस समय भूमि माता का वहां से निकलना कैसे संभव हो पाएगा। When he started praying to the Supreme Lord, from his nose, a small insect in the form of a mosquito appeared actually. और उस समय वो भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान के चरण कमलों का, तभी उनके नासिका से एक बहुत छोटे रूप से छोटा सा जीव जैसे है वो उत्पन्न हुए। Suddenly, this small insect started flying in the sky, and gradually it improved its size, and it appeared as a very huge Varaha form. और वो छोटे से जीव जो वो बिल्कुल छोटी आकृति के थे, जैसे बाहर आए नासिका से ब्रह्मा जी के, वो उड़ना शुरू किए और कुछ ही समय में उन्होंने बहुत विशाल रूप धारण कर लिया, जो कि वो वराह भगवान का रूप था। So Brahma was surprised to see the appearance of huge Varahadev from his nostril, and when he was in a doubtful way, when he was thinking about the identity of Varahadev, whether he may be the Supreme Lord, my Lord, the boar made a huge sound acknowledging the decision of Brahma. और उस समय ब्रह्मा जी बड़े विस्मय, बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन हो सकते हैं, इतना विशाल रूप, क्या ये परम पुरुषोत्तम भगवान है या कौन है ये। उसी समय वराहदेव ने एक बहुत बड़ी गर्जना की, ये दिखाते हुए कि जो आप सोच रहे हैं वही सत्य है। In this way, after revealing his identity as the Supreme Lord, Lord Varahadev, he appeared for the purpose of rescuing Mother Bhuma Devi, or Earth, from the ocean of Garbho ocean. So he went underneath the Garbho ocean and he started doing his activity. इस प्रकार से अपने रूप को दिखा करके अपनी जो उनका भगवान का रूप था ब्रह्मा जी को वो ज्ञात हो गया, तब वो भूमि की रक्षा करने के लिए, भूमि माता की रक्षा करने के लिए गर्भोदक सागर में प्रवेश किया। So in Srimad Bhagavatam, here in this portion,
Maitreya Rishi actually he speaks about the descriptions of two forms of Varahadev together. तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर श्री वराहदेव के दो रूपों का वर्णन किया जा रहा है. This Varahadev, known as Sweda Varahadev, appeared in the beginning of Manvandra, Swayambhu Manvandra, in the time of Swada Varahadev, Sweda Varaha Manvandra, Sweda Varaha Manvandra, in the first day of Brahma, actually, known as Swayambhu Manu's time. तो ये स्वयं भू मनु के समय जो है उनके कार्यकाल में उस मनवंतर में ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस में ये श्वेत वराह जो मनवंतर है उसमें श्वेत वराह उत्पन्न हुए, प्रकट हुए. So this Varaha avatar appeared in the color of whitish color. So that is he is known as Sweda Varahadev. तो इनका रंग जो है श्वेत था, उनकी कांति श्वेत थी, इसलिए उनको श्वेत वराह कहा जाता है. Later on, during the time of Shaksha Manvandra, one sudden pralaya happened actually. और उसके पश्चात बाद में फिर शाक्ष मनवंतर के समय में एक बार प्रलय जब हुआ था, that time another Varahadev known as Neela Varahadev also appeared to rescue the earth. और उस समय भूमि माता की रक्षा करने के लिए प्रभु इज रक्त वराह और नील वराह. Neela Varaha, as per VCT commentary. Of course, we can say Rakta Varaha also. But I am speaking as per VCT commentary. It is known as Neela Varaha. तो उस समय एक नील वराह जो भगवान का अवतार हुआ था उनको नील वराह कहते हैं. Of course, some commentators says that is known as Rakta Varahadev also. और कुछ टीकाकार जो है उनको रक्त वराह के रूप में भी उनको बताते हैं. But as per the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur, I am paraphrasing it as Neela Varahadev. लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका के अनुसार इनको नील वराह कहा गया. So here Maitreya Rishi commend both descriptions and leelas of the both avataras together, and he narrated it through Varaha. और यहाँ पर जो मैत्रेय ऋषि हैं उन्होंने विदुर को दोनों वराह अवतार के बारे में वर्णन सुनाया. The Supreme Lord went underneath the Garbha ocean and he exactly acted like a wild boar animal. तो भगवान वराहदेव वो गर्भोधक सागर के अंदर गए और बिल्कुल जैसे एक सूकर जो है जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उस प्रकार से ही बिल्कुल वो व्यवहार कर रहे थे. Boar is very fond of tilting the ground and trying to find its eatables like roots and vegetables. जिस प्रकार से ये जो सूकर होते हैं वो जा करके वराह जो होते हैं वो पौधों के जड़ को प्रयास करते हैं, उसको खोदते रहते हैं, जमीन में उसको खाने का प्रयास करते हैं. The Supreme Lord enacted same kind of pastimes in a very beautiful way. तो परम पुरुषोत्तम भगवान ने वैसे ही बहुत सुंदर उसी प्रकार की लीला की. But at the same time, we have to understand that he is the supreme personality of Godhead, appeared in his original Suddha Sattva, eternal, blissful body. लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये कोई सूकर या कोई ऐसे कोई प्राणी नहीं, बल्कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में विराजमान है. From his activities and especially from the prayers of sages of higher planetary systems, we are able to understand he is the supreme personality of Godhead, who is the object of all sacrifices. तो उनके कार्यकलापों से और जितने ऊपर के लोगों के जो वासी हैं, जो उनकी जब प्रार्थनाएं करते हैं, तो उनसे हमें ज्ञात होता है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान हैं जो कि सभी यज्ञों के भोक्ता हैं. So the denizens of the higher planetary systems are more, especially the denizens of Jnanaloka, Tapaloka, and Brahmaloka. They are so much intelligent than the people of this lower planetary system. तो ऊपर के लोग जैसे कि ज्ञान, तप लोग, महर लोग, ये लोग जो है सत्य लोग, यहाँ के वासी जो हैं वो बहुत बुद्धिमान है यहाँ के लोगों के बच्चा. So naturally, here we can see from the prayers of the sages of higher planetary systems that
they offered very beautiful prayers to this Varaha form of the Lord. तो उनके ऊपर के लोगों के जो ऊपर के वासी हैं, उनकी प्रार्थनाओं से हम देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं इस भगवान के जो बहुत अद्भुत वराह रूप के लिए. So they prayed that the Supreme Lord is the form of all sacrifices. वो कहते हैं कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप है, ये सभी यज्ञों के विषय वस्तु हैं. And his transcendental body is the abode of Mother Lakshmi. और उनका दिव्य रूप जो है, शरीर जो है, वो माता लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है. And he is the object of all sacrifices. और सभी यज्ञों के वो विषय हैं, उनके भोक्ता हैं. And generally it is said that the water which touched the body of ordinary boar of this material world is very obnoxious and very impure in nature. जैसे देखा जाता है कि जब जल जो है इस प्रकार के किसी सूकर को स्पर्श करते हैं तो वो बहुत मलिन हो जाते हैं. But here we are able to see that the water splashed by the hairs on the bodies of Lord Varahadev were taken in a very humble way, in a very respectful way, by the resonance of the Swargaloka and the higher planetary systems. लेकिन स्वर्ग लोक के वासी और ऊपर के लोगों के वासी जो हैं, उनके द्वारा भगवान वराह देव को स्पर्श करने के पश्चात, उनके दिव्य शरीर को स्पर्श करने के पश्चात सारे जल को बड़े ही आदर पूर्वक उनको ग्रहण किया गया. We can see that especially in our Sampradaya, there is not so much worship of Varaha Devi is going on, but we can see in the religious history of other Sampradayas, Vaishnava Sampradayas of India, we can see that Varaha Devi is worshipped with so much awe and veneration. तो हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है, विशेष रूप से गौड़ी संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में. लेकिन विशेष रूप से अगर हम देखें कि और जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, उनके अंदर बहुत ही आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक वराह देव की स्तुति की जाती है, उनकी आराधना की जाती है. We can see in Udupi. In Udupi, they have Ashtamat, 8 mats established by Madhvacharya. जैसे उडुपी में जो अष्टमठ हैं, जिनकी स्थापना माधवाचार्य जी ने की थी. And each mat has his, even though Lord Sri Krishna is the prominent deity worshipped in Udupi, but these Ashtamats, 8 mats has their respectful worshipful deities like Narsimhadev, Varahadev, etc., etc. तो हालांकि उनके सेवित आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन अष्टमठ में उन लोगों ने हर एक मठ जो है वो एक अधिष्ठाता भगवान के रूप को अधिष्ठाता बना करके उनकी सेवा करते हैं, जैसे कि नरसिंह देव, वराह देव इत्यादि. So naturally, in some mats, especially in one mat, their worshipable deity is Lord Varahadev. For them, the ultimate form is Lord Varahadev. Lord Varahadev is everything actually. और उनमें से 8 मठों में से एक मठ में जो उनके अधिष्ठाता जो सेवित विग्रह हैं, वो है वराह देव. Especially Varahadev form, even though we say it is a pig form, it's a boar form, but it is considered by the Vedic scholars and Vaishnava scholars as the personification of all sacrifices. When we want to do sacrifices, when we want to offer especially sacrifices, we have to offer sacrifices for the Varahadev form of the Lord. तो हालांकि ये एक सूकर के रूप है, ऐसा दिखता है, लेकिन बताया गया शास्त्रों में कि सभी यज्ञों के ग्रहण करने वाले ये भगवान वराह देव का जो रूप है, ये सबसे उपयुक्त है. जब भी कोई यज्ञ करते हैं वैष्णव पद्धति से, तो वो भगवान वराह देव को अर्पित करते हैं. So this pastime of Sveda Varahadev is narrated in the 13th chapter of 3rd canto of Srimad Bhagavatam. तो श्वेत वराह देव के बारे में जो वर्णन किया गया है, तीसरे स्कंद के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में किया गया है. Then again in the 16th chapter of the same 3rd canto of Srimad Bhagavatam, the descriptions about the Rakta Varahadev, or as per the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur Pada, Neela Varahadev also appears. और इसी स्कंद के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय में
रक्त वराह देव या विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका के अनुसार नील वराह देव के बारे में भी वर्णन किया गया है. So previous to that, in the previous chapter, actually 16th chapter, 17th chapter, the descriptions about the atrocious activities of Hiranyakashipu and Hiranyaksha has been narrated actually. तो इसके पूर्व जो है वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जो आतताई कार्यकलाप हैं उनके बारे में वर्णन किया गया. So Hiranyakashipu and Hiranyaksha both were demonic brothers, and Hiranyakashipu is the eldest one. But since they were twin sons, Hiranyaksha took birth from the womb of Mother Tidi first. तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों असुर जो हैं ये दोनों भाई हैं और दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दीति के गर्भ से पहले जो है इनका ही जो जन्म हुआ वो हिरण्याक्ष का हुआ. So Hiranyaksha, in his usual demonic spirit, used to offer so many nice gifts after defeating many kings from the different parts of the universe to his brother, elder brother, Hiranyakashipu. तो हिरण्याक्ष जो है वो सभी को जीत करके और लूट करके सारा धन जो है अपने बड़े भ्राता हिरण्यकश्यप को दिया करते थे. So Hiranyaksha, he traveled here and there in different parts of the universe, and he started winning all different kinds of kings of this material world. और हिरण्याक्ष इस प्रकार से पूरे लोक पर हर जगह पर जा करके और सब जगह पर वो जीत हासिल किया करते थे. And he defeated everybody in a very easy way. और सबको बड़ी आसानी के साथ में वो परास्त कर दिया करते थे. And all the demigods, out of fear of him, they ran, they hidden themselves in different parts of the universe. सभी देवती देवतागण उससे डर करके भयभीत होकर के अपने आप को कहीं न कहीं छुपा लिए. So naturally, he became intoxicated with pride without seeing different demigods who are ready to fight with him. और तब जो है इस प्रकार से जब हमने देखा कि सब लोग उससे भयभीत हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर अहंकार आ गया, बड़े गर्वित हो गए अपने ऊपर को. So here it is said that Savai Trihodidan Drishtva Mahasha Svena Daityarat Senadran Devaganan Shibban Apasyan Ventat Prasham Apasyan. He was not able to see any equal opponent enemy for him at all. और इस प्रकार उनको लगा कि उनसे उनके बराबर कोई शत्रु उनका है ही नहीं, उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, वो सबसे ज्यादा पराक्रमी है. So he was very fond of fighting, but he was not able to find a suitable opponent for fighting, even in the celebrated Swargaloka. तो वो उनको युद्ध का बड़ा ही उनको युद्ध के प्रति बड़ी रुचि थी, लेकिन पूरे स्वर्ग लोक तक जाकर के उन्होंने भ्रमण कर लिया. उनको लगा कि उनसे युद्ध करने के लिए उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है उनके समान. So he was frustrated because he was not able to find a suitable fighter for him. और कारण वो निराश हो रहे थे क्योंकि उनको उनके अनुकूल कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिल रहा था. So naturally, after coming down to the lower planetary systems, so he entered inside the ocean. Dasmin Pravishte Varnashya Shainiha. He entered into the area of Varna Bhagavan. और जब वो वापस आए तो नीचे के लोकों में तो क्या क्या उन्होंने सागर में प्रवेश किया और सागर में जाकर के वो वरुण देव के पास गए. So he entered inside the ocean. Finally, he went to the capital of Varna Bhagavan, known as Vibhavari. तो विभावरी जो वरुण देव जी का जो राजधानी है वहां पर पहुंचते हैं वो. There he showed his prowess. और वहां पर अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. So Varna Bhagavan, whose capital was Vibhavari, he wanted to fight with Varna Bhagavan, who was seated in his capital known as Vibhavari. तो वहां पर वो वरुण देव से युद्ध करना चाहते थे जो अपने राजधानी विभावरी में बैठे हुए थे सिंहासन पर. So since he was so much intoxicated with pride, he insulted Varna Bhagavan. Actually, he fell down in the lotus feet. He fell down in the feet of Varna Bhagavan, and in a joking way, in a funny way, he asked for a chance for fighting.
तो वहां पर जा करके वो उनके पास जा करके और बड़े ही हास्यपद रूप से हास्य परिहास करते हुए उनसे कहने लगे कि आप कृपा करके मुझे लड़ने का वरदान दीजिए. So Varna Bhagavan was actually capable of fighting with him, but actually now he has become so old and he was retired from fighting. So naturally he didn't want to fight with the demon Hiranyaksha. तो वरुण देव भी युद्ध करना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब वो वृद्ध हो चुके थे, इसलिए वो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे. Actually, Hiranyaksha was joking on him. You have won so many Devadas and Danavas and have conducted a beautiful big Rajasya sacrifice. So please give me a chance for fighting. और उस समय बड़े हास्य रूप में हिरण्याक्ष उनको कह रहे थे कि देखिए आपके पास तो इतने देवता हैं, इतने असुर हैं, आपने राजसूय यज्ञ किया है, कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए आपसे युद्ध करने के लिए. So Varna Bhagavan, even though he got angry, actually he got angry, but he subdued his anger by his intelligence. तो उस समय उनको क्रोध आ गया वरुण देव को, लेकिन उन्होंने बुद्धिमत्ता से अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण किया. Here it is said that Rosam Samuttam, he got angry. Anger was produced in him. But Samayan Svayadya, he, by his reason, Dya means intelligence in Sanskrit, Samayan means controlling, he controlled his anger with his intelligence. तो यहाँ पर बताया गया श्रीमद् भागवत में क्रोध उनको आ गया था, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि से उस क्रोध के ऊपर नियंत्रण किया. So it's a very beautiful verse, verse number 29 of 17th chapter actually. So here it is said that we have watched Angaboshamam Gadavayam. In Sanskrit, Gada means given up. So he told that I have already given up the mood of fighting. तो 17वें अध्याय में बताया गया ये श्लोक में 30 स्कंद के कि वो कह रहे हैं कि मैंने अब जो है युद्ध करने का विचार त्याग दिया है. So indirectly he was saying I have taken sannyas. I have taken sannyas. तो अप्रत्यक्ष रूप से वो कहना चाह रहे थे कि मैंने तो संन्यास ले लिया है, कि मैं संन्यास ले चुका हूं. Many times when you speak, especially whenever some qualified devotees they speak, the divine Saraswati speaks through the tongue of the celebrated devotees. तो देखा गया कि बहुत बार जब ऐसे दिव्य भक्त जब कुछ बोलते हैं तो माता सरस्वती उनके जीवा पर वास करके और उनको बहुत सुंदर शब्द उनके मुख से निकलवाती है. Correct, because without his knowledge he spoke proper words, because Hiranyaksha had such a power and he is capable of fighting only with the Supreme Lord. क्योंकि उस समय उनके मुख से बिल्कुल सही शब्द निकलवाती हैं सरस्वती माता जी. वो उन्होंने कहा कि हिरण्याक्ष जो है उनके पास इतना बल था कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान से ही वो उनको युद्ध करना चाहिए. Next chapter, in the description of fight between Hiranyaksha and the Supreme Lord, we are going to discuss these points little more in detail. तो अगले अध्याय में बताया गया किस प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान वराह देव और हिरण्याक्ष के बीच में जो युद्ध होता है उसमें हम विस्तार से इसका श्रवण करेंगे. So here, without his understanding, Saraswati, divine Saraswati, spoke through the tongues of Varna Bhagavan that like follows. So in the sloka number 30, he told that in this material world, I see nobody except the Supreme Personality of the Godhead who is competent to fight with you. तो 20वें श्लोक में इस अध्याय में बता रहे हैं आगे कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, केवल परम पुरुषोत्तम भगवान ही आपसे युद्ध करने के योग्य हैं. So the beautiful words used here is that Pashyami nanyam purusham pradhanat. Pashyami na anyam. So except na anyam, except him, I see nobody who is capable of fighting with you. तो यहाँ पर शब्द आ रहा है कि बोल रहे हैं कि पश्यामि नाम, कि मैं और किसी को नहीं देख पा रहा हूं उनको छोड़ करके, परम पुरुषोत्तम भगवान के अलावा और कोई आपसे युद्ध करने के योग्य नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूं किसी को. Yeah. Who is that particular person? Purushat Pradhanat. That person is the ultimate Purusha, the oldest person of this creation. और कौन है वो पुरुष? पुरुष पुरातन, वो आदि पुरुष है. Yeah. Can anybody say that the same descriptions come in
Brahma Samhita, he is the ultimate Purusha, but he is the oldest one. What's the particular line comes in Brahma Samhita? Advaitam Anadya Chitvanat Adiyam Purana Purusam Navayam Namcha. So he is the oldest person. So that person is only capable of fighting with you. तो वो जो पुरुष हैं जो सबसे पुरातन हैं वही आपसे युद्ध करने के उपयोगी है. That particular person is Ranamarga Kovidam. Kovidam in Sanskrit means so expert. Rana means fighting. So in the art of fighting, he is an expert person. तो वो बिल्कुल युद्ध कला में कौशल है, वो युद्ध कला में भी निपुण है वो. Rana means in Sanskrit fighting. तो वो युद्ध कला में लड़ने में बिल्कुल कुशल है. वो असुर ऋषभ है, वो चीफ ऑफ द असुरा, only he can fight with you. तो हे असुरों के प्रमुख, केवल वही आपसे युद्ध कर सकते हैं. So please approach him. तो कृपा करके आप उनके पास जाइए. Again the word is used ihidam. Please approach him in Sanskrit. Please go to him actually. तो कृपा करके उनके पास जाइए आप. So immediately Hiranyaksha becomes so happy, and he actually in the commentaries it is said that he told how many days it will take for me to reach him actually. तो वो तुरंत तैयार हो गया और यहाँ पर टीकाकार बताते हैं मुझे कितना समय लगेगा उनके पास पहुंचने के लिए. So in the commentaries of Vishwanath Chakravarti it is said that Varna Bhagavan said within 5 days you will meet him. तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं अपनी टीका में कि उनको वरुण देव कहते हैं कि आप 5 दिन में उनसे मिल सकते हैं. But Varna Bhagavan was not able to exactly say about the location of that Supreme Lord. लेकिन वरुण देव ने उनको उनकी वास्तविक उनकी जो उनका स्थान था रहने का वो नहीं बताया. But Varna Bhagavan gave a warning also. Tam Veera Marat Abhibatya Vishmayaha Yantvat Pidanam Ashadam Prashandaye Rupani Datte Sat Anugrahachaya. You see, if you go there and you are going to fight with him, but definitely you will be killed by him in the battlefield, and you will lie down in the battlefield, and you will become a feast for the street dogs. और तब वरुण ने बोला कि आप जा तो रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से आपकी पराजय होगी और भगवान के हाथों आपका वध होगा और आपका मृत शरीर वो कुकर और सूकर जो कुत्ते बिल्ले होंगे उनका भोजन बनेगा. But since Hiranyaksha was in the mood of fighting, since he was so arrogant, he was not able to give attention for that important words. लेकिन उस समय हिरण्याक्ष बिल्कुल युद्ध करने के लिए इतने मदमस्त थे, इतने प्रमत्त थे कि उन्होंने इस बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. Asuras thinks that within this material world nobody can win over them. क्योंकि ये आसुरिक मानसिकता होती है, वो सोचते हैं कि इस जगत में कोई मुझे नहीं जीत सकता. So the descriptions of Asuras were explained, narrated beautiful way by Lord Sri Krishna in the last portion of Srimad Bhagavad Gita. तो श्रीमद् भगवत गीता के आखिरी अध्यायों में विशेष रूप से वहां पर आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है. So when Hiranyaksha was searching for the whereabouts or the exact location of the Supreme Lord, fortunately, the same city, Narada Muni was roaming there. तो जब उस समय ये ढूंढ रहे थे भगवान कहाँ पर हैं, कहाँ पर मिलेंगे मुझे विष्णु, उसी समय उधर नारद मुनि से उनका दर्शन हुआ. Then from him he understood Harer Viditpa Gadimango Narada, from Narada. Narada means from Narada in Sanskrit. From him he understood Rasadalam Nirvisheshe Dvarna Vidha. The Lord was that time enacting his pastime of lifting the mother earth from Garbho ocean, from the area of Rasadala. तो उस समय ज्ञात हुआ उनको नारद मुनि से कि भगवान उस समय लीला कर रहे हैं गर्भोदक सागर से भूमि माता को निकालने के लिए. So here in the verse the word Rasadala is used, not Garbho ocean is used. तो यहाँ पर शब्द गर्भोदक जो सागर वो नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर रसातल शब्द आया. Rasadala is one of the planetary system of the lower planetary systems. That's all. तो ये निम्न लोकों में एक लोक है रसातल. But Acharyas give a clear description that this Rasadala does not mean the
lower Rasadala planet, but it is basically Garbo ocean. लेकिन आचार्य लोग बताते हैं कि ये रसातल जो है वो निम्न लोकों का एक लोक नहीं है, बल्कि ये गर्भोदक सागर का एक भाग है. And the Acharya statements were supported from the statements of Rupa Goswami's Lahubahudamrita. और आचार्यों की टीकाओं को उसी प्रकार की पुष्टि करते हैं जी गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री लघु भागवतामृतम में. In this way, if we have some, if we are not able to understand some of the statements of Srimad Bhagavatam, some of the words of Srimad Bhagavatam clearly, and we have to understand that particular words or statements through the commentaries of Acharyas. तो अगर कोई शब्द या कोई वाक्य में समझ में नहीं आ रहा है भागवतम से, शास्त्रों से, तो हमको आचार्यों की टीकाओं से उसको समझना होगा. Even in Srimad Bhagavatam, which is considered as the Amalam Puranam, some one or two sentences may glorify the aspect of impersonal Brahmajyoti than Bhakti also. श्रीमद् भागवतम जिसको हम अमल पुराण कहते हैं, वहां पर भी अगर हम सावधान नहीं है तो हम समझ पाएंगे कि एक दो श्लोक ऐसे हैं जो लगता है कि वो निराकार ब्रह्म को ज्यादा महत्व दे रहे हैं भक्ति की अपेक्षा. Especially in the 12th canto of Srimad Bhagavatam, one verse speak like that. जैसे कि 12वें स्कंद में एक श्लोक इस प्रकार का है. But Jiva Goswami Srila Prabhupada has given a beautiful explanation for that particular verse and proves that why Sukadeva Goswami spoke that particular verse, and he explains so many beautiful reasons for that actually. लेकिन श्री जी गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप से उसकी व्याख्या करते हैं कि क्यों सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर इस प्रकार से उपयोग किया इस श्लोकों का. So in another class we will speak very detail about this kind of things actually. तो हम कभी और कक्षा में उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. So here the demand Hiranyaksha misunderstood the identity of the Lord as an ordinary animal, Vanakochara, and he started rebuking the Supreme Lord. तो यहाँ पर हिरण्याक्ष भगवान को समझ नहीं पाए, वो उनको एक साधारण पशु समझ करके और उनके साथ व्यवहार कर रहे थे. And he laughed at the Lord. वो उनके ऊपर हास्य किए, उनके ऊपर हास्य परिहास किए. So this is demonic way of understanding about the Lord. तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है भगवान को समझने के लिए. Previously, the 13th chapter, we saw the sages of the hair planter system glorified the same form of the Lord in a very beautiful way. अभी हमने देखा 13वें अध्याय में किस प्रकार से ऊपर के लोकों के वासी भगवान के वराह रूप का इतना सुंदर प्रार्थना पूर्वक उनका वर्णन कर रहे हैं. And in one of the sloka in that particular section, it is said that if a nice, beautiful elephant, after taking bath in a forest reservoir of water, when it come outside, it will come with beautiful lotus flowers in its trunk. So it appeared like that. The Lord was emerging from the Garbho ocean, carrying a beautiful Bhumi Mata in his tusk like that. तो वहां पर वर्णन किया गया कि जिस प्रकार से कोई एक बहुत श्वेत सुंदर हाथी जो है, जब वो ऐसे क्षीर सागर से निकल करके और पुष्प अपने सूंड में पुष्प लेकर के, कमल का पुष्प लेकर निकलते हैं, इतना सुंदर दृश्य, उसी प्रकार से वराह देव अपने जो सूंड का भाग है उस पर जो है वो भूमि माता को लेकर के वो निकल रहे हैं. And in some of the temples in South India, you can see that Varaha Dev was keeping Mother Lakshmi, Mother Bhumi Mata, in his right thigh also. और कहीं कहीं पर हम देखते हैं दक्षिण भारत में कि वो अपनी दाहिनी जंघा पर भूमि माता को लेकर के निकल रहे हैं. A wife looks so beautiful when she was seated on the thigh of her husband or father, a girl. तो ऐसे बताया गया कि जब स्त्रियां विशेष रूप से अपने या तो पिता या पति के जब उनके ऐसे जंगे पर बैठती हैं तो वो बहुत सुंदर लगती हैं. This is the marriage system followed still nicely in many higher castes of India. और इस प्रकार से विवाह का जो उच्च परिवारों में, उच्च कुल में विवाह होता था, अभी भी भारतवर्ष में इसका चलन है. So in the Narsimha Avatar, Lakshmi came last only to sit on the lap of
Lakshmi, Varaha, Nrsimha Bhagavan. तो भगवान नरसिंह की लीला में लक्ष्मी देवी अंत में आती हैं भगवान नरसिंह भगवान के चंगा पर बैठने के लिए. But they, especially in this Leela, we can see that the Lord was so affectionate to his wife Bhumi Mata, and he was always carrying her actually. और इस वराह लीला में हम देखते हैं कि भगवान इतने स्नेहिल हैं भूमि माता के ऊपर कि उनको शुरू से ही वो अपने गोद में बिठा करके वो लेके आ रहे हैं ऊपर. But here we are able to see Diman Rinaksha, he has a different attitude and understanding. He was laughing at the Lord, known as Vanakocharaha. और यहाँ पर लेकिन हम देखते हैं कि ये असुर हिरणाक्ष उनकी मानसिकता जो आश्रित मानसिकता है वो भगवान को एक साधारण पशु समझ करके उनके ऊपर हंस रहे हैं. So the word Vana means forest in Sanskrit. तो संस्कृत में वन का मतलब होता है जो जंगल. In South Indian languages, it is known as Vanam, forest. और दक्षिण भारत में उसको वनम कहते हैं. Kochara means one who roams in the forest or wild animal of forest. और गोचर का मतलब जो वन में चरते हैं वन में भ्रमण करते हैं अर्थात जंगली जानवर. So he laughed at the Lord as a wild animal of forest, wild forest animal. तो वो भगवान के ऊपर हंसे उनको एक जंगली जानवर समझ करके. But in Sanskrit, Vana means water also. लेकिन संस्कृत में वन का मतलब जल भी होता है. Especially moving water. बहता हुआ पानी. So one who lies on the water, which was always agitating, so it refers to Garbhadasa Vishnu also. तो ऐसे जल पर जो हमेशा जल पे सतह पे जो हमेशा विश्राम करते हैं उसमें रहते हैं उनको भी जैसे कि यहाँ पर गद्भोदक सागर में पड़े हैं भगवान तो वहां पर उनको भी वन गोचर कहा गया. So naturally he glorified the Supreme Lord also. तो एक तरीके से भगवान का गुणगान किया उन्होंने. So this particular portion of Srimad Bhagavatam, the verses, like this, some portions of in Bhagavatam, we can see that the demands, they deride the Lord, which is known as Nindabaksha in Sanskrit. तो ऐसे कुछ भागों में हम देखते हैं कि जहां पर असुर लोग जो हैं असुरी लोग वो भगवान को इस प्रकार से लगता है कि वो लांछन लगा रहे हैं लेकिन उनका गुणगान कर रहे हैं वो. प्रभु what word you used as end प्रभु जी? Nindabaksha. निंदा पक्ष. But without their knowledge, actually they were glorifying the Lord. And by the mercy of the Acharyas, we can understand that Stuti Paksha hai. तो लेकिन वो अनजाने में जब आचार्यों की टीकाओं से हम समझने लगता है कि वो भी निंदा पक्ष नहीं वो उनकी स्तुति पक्ष है स्तुति कर रहे हैं वो. So you have to remember these two words, Ninda Paksha hai and Stuti Paksha hai. तो दो शब्दों को हम ध्यान देंगे निंदा पक्ष और स्तुति पक्ष. So here again in the next sloka he was offending the Lord that this Bhumandala belongs to ourselves. It is only for our enjoyment. You cannot take it. तो अभी आगे श्लोक में हम देखेंगे किस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि भूमि माता वो हमारे आनंद के लिए हैं आप इनको लेकर नहीं जा सकते. But without his knowledge, he was speaking. When we divide the same words of this particular sloka as per a different sandhi rule, the rule is like that. This material word, this Brahmanda, belongs only to yourselves. Only you have the right to enjoy it. लेकिन अगर उसको हम संधि विच्छेद करके और संधि के द्वारा देखेंगे हम correct. तो वहां उसका अर्थ आएगा कि ये भूमि माता केवल आपकी ही हैं और केवल आप ही इनका भोग कर सकते हैं. Just like he is using the word Suradamaha. When the word Suradamaha divided into two, Sura Ukta Adamaha, it means you are the lowest of all the demigods. जैसे यहाँ पर शब्द आया कि सुर उत्तमः अर्थात इसका मतलब तो सुर जो देवता हैं उसमें आप सबसे ऊपर. But when it is taken together, it means also that you are the supreme lord of all the demigods. हाँ तो अगर वैसे लेंगे अलग अलग तो आएगा कि आप सबसे नीचे हैं देवताओं में लेकिन यहाँ पर जब साथ में लेंगे तो बताएंगे कि आप सर्वोपरि हैं आप सबसे ऊपर हैं. When I come Kuwait next time, I will explain all these Sindhi rules in a very detailed way. पर आएंगे कुवैत पे तो हमको गंभीरता से इस भेद को बताएंगे. I will divide in front of you and I will explain actually.
No, I have not. वहां पर हम लोग उसको संधि विच्छेद करके प्रभु जी समझाएंगे, बता रहे हैं. In the same way, he used the word ja, aja. The Lord does not know anything, but actually the real meaning is that since the Lord knows everything, there is nothing hidden from him actually. उसी प्रकार यहाँ पर शब्द आया है कि अज, अर्थात वो कुछ नहीं जानते, जबकि इसका जब हम आचार्यों की टीकाओं से देखते हैं तो इसका ये शब्द आता है अर्थ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं है. In this way, he actually insulted Lord in so many ways, but without his knowledge, he was glorifying the Supreme Personality of the Godhead. तो इस प्रकार से लग रहा था कि वो भगवान का अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन अंततः ये हुआ कि वो सब कुछ स्तुति कर रहे थे उनकी. Actually, this portion of Srimad Bhagavatam has to be explained in a very detailed way, explaining the different rules of Sandhi as explained by Jiva Goswami in his Harinam Vyakarna. तो इसको बहुत सुंदर रूप से ये जो भाग है श्रीमद् भागवतम का, इसका संधि करते हुए श्री जी गोस्वामी पाद ने हरिनाम व्याकरण में इसकी बहुत सुंदर रूप से व्याख्या की. But the Lord was little concerned about the abuses of the demon Hiranyaksha, and he was so much concerned about his service of rescuing his wife, Mother Bhumada. और दूसरी ओर भगवान वो चूंकि आए थे भूमि माता की रक्षा करने के लिए उस समय, तो वो पूरा ध्यान उनके ऊपर दे रहे थे. Finally, the Lord lifted Bhumada from the Garbho ocean and installed it in his original position near the higher planet systems. और अंततः फिर उन्होंने उनको भूमि माता को वहां से निकाल करके और उनको जहां पर उनका स्थान था लोक में, भूमि लोक को वहां पर रखा. The Lord was so much concerned about his service, and even though he got insulted, he paid little attention to the insult of Hiranyaksha demon. तो हालांकि उनको वो अपमान करते जा रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि उनका अपराध हो रहा है, लेकिन भगवान ने पहले उनको भूमि माता को वहां पर उनके स्थान पर रखा. So the Lord has a transcendental form. In one sense, he was about the insults of this material world. तो भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, जो इस भौतिक जगत के परे है. So naturally, material insult cannot affect him at all. इसीलिए भौतिक अपमान भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता. But at the same time, he is so much pleased when devotees offer prayers to him. He is a little bit unhappy when his own children insult him. तो वो ऊपर से लोगों में सभी लोग, उनके भक्त लोग जो है उनका गुणगान कर रहे थे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब उनके स्वयं के पुत्र इस रूप में, आसुरी रूप में जब अपमान करते हैं, तो भगवान थोड़े अप्रसन्न भी हो जाते हैं. So now the Lord challenged demon Hiranyaksha for fighting. और तब भगवान ने उनको चुनौती दिया युद्ध करने के लिए. He told that unless there is you win me and prove your words of challenge, you does not deserve to sit in an assembly of learned persons. उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे चुनौती दी है, जब तक आप मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको जो विद्वान की सभा है उसमें बैठने का अधिकार नहीं है. He said that swam pratingyam na adiparati asabhyah. You are not fit to sit in an assembly of a learned person because you are just speaking boasting words. कि आप खाली ऐसे बस बोलते जा रहे हो, अपना गुणगान करते जा रहे हो, पढ़ाई करते जा रहे हो, आप विद्वानों के समूह में बैठने के योग्य नहीं हो. So by hearing these insulting words, demon Hiranyaksha becomes so much angry. तो ये सुन करके अपराध जो इस प्रकार से उनके प्रति ऐसे जो शब्द थे, उनको सुन करके, प्रतिकूल शब्द को सुन करके हिरण्याक्ष बड़े क्रोधित हो गए. So his anger was compared to the anger of a dangerous cobra. तो जैसे एक भयानक कोबरा जो सांप होते हैं, उनका क्रोध, उससे उनकी तुलना की गई यहाँ पर. So taking his mace, he started and tried to attack the Supreme Personality of God. और तब वो भगवान के ऊपर आक्रमण करना शुरू करते हैं. So but the Supreme Lord, in a very expert way, avoided the attack of demon Hiranyaksha. लेकिन भगवान ने बड़ी चतुराई के साथ में उनके आक्रमण को निरस्त कर दिया.
So the comparison is given that just like an accomplished yogi avoids death by the achievement of his mystic perfection. जैसे यहाँ पर तुलना दिया गया, जैसे कोई एक योगी होते हैं, वो कैसे अपने योग के द्वारा बहुत चतुराई से सब कुछ बिल्कुल बचा लेते हैं. Next, when the Lord now, when he threw his mass on Dhiman Hiranyaksha protecting himself actually. तो दूसरी बार जब भगवान ने उनके ऊपर अपने गदे से प्रहार किया, तो हिरण्याक्ष ने भी अपना बचाव किया. In this way, the fight was going on the surface of the Garbho ocean for a very long time. तो इस प्रकार से गर्भ ओशन के सागर के ऊपर तट पर जो है बहुत लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहा. Both seemed equal competence in fighting and both experienced injuries in their bodies. और दोनों ही बड़े समान रूप से ताकतवर लग रहे थे, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, और दोनों लोग के ही शरीर पर कुछ न कुछ वो जख्म आ गए थे. Both of them showed different skills of fighting. और दोनों लोगों ने, दोनों पक्ष ने अपने अपनी तरफ से अलग अलग युद्ध के कौशल दिखाए. It appeared that it's something like a fight between two bulls for the sake of one cow. ऐसा लग रहा था कि एक गाय की रक्षा करने के लिए दो बैल आपस में लड़ाई कर रहे हैं, प्राप्त करने के लिए गाय को. So in the sloka number 13, the word is used, beautiful word, ilayam iba susmino, ilayam iba susmino mridaha, for the sake of a cow, ilayam, two bulls were fighting. So the word ilayam can refer both to cow and earth also. तो यहाँ पर शब्द आया है ईलायाम, और ये शब्द पृथ्वी माता, भूमि माता और गाय दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है. What is the name of this Bhumandala previously in Vedic culture? इस भूमंडल का वैदिक सभ्यता में क्या नाम बताया गया है? इलावत वर्ष. Ilavata Varsha. So naturally, Ilavata Varsha refers to cow also, earth mandala also. So for that fighting is going on. So, but particularly in this section of Srimad Bhagavatam, Acharyas give very beautiful insights for this section of Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम के इस भाग के लिए जहां पर युद्ध हो रहा है इनके बीच में, आचार्यों ने बहुत सुंदर टीकाएं दी हैं इसके ऊपर. See, it is said that Janmadi Ashyadaha, everything springs from the absolute truth. जैसे भागवतम में बताया गया, श्रीमद् भागवतम में, कि सब कुछ परम सत्य से उत्पन्न हुआ है. So the Lord is the fountainhead of all the rasas, taste. तो भगवान ही सभी रसों के उद्भूत स्रोत हैं. So he has all the rasas. That rasas we know, he has a rasa of Varsalya, he has a rasa of Madhurya, and he has a rasa for fighting also. तो सभी रसों के वो अखिल रस मूर्ति हैं, जैसे कि वात्सल रस, माधुर्य रस और वीर रस भी भरा पड़ा है उनके अंदर. So generally he reciprocates in Madhurya rasa and in Vatsalya rasa, 5 primary and secondary rasas, which is eternal spiritual associates in spiritual world. तो जो प्रमुख रस बताए गए हैं, जो प्राथमिक रस हैं, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, इन सब रसों में भगवान अपने जो शाश्वत नित्य पार्षद गण हैं, संग हैं, उनके संगी उनके साथ में करते हैं. He enjoys, he releases fighting rasa, vir rasa also to some extent with his eternal cowherd boys in Goloka Vrindavan. तो गोलोक वृंदावन में अपने नित्य, जो उनके नित्य पार्षद गण हैं, जैसे कि ग्वाल बाल, उनके साथ में वो वीर रस का भी कभी कभी आदान प्रदान करते हैं. But surely he did not release that rasa to the fullest extent, especially in Vaikuntha, where all of them, most of them, do service in the mode of Dasharasa and Sandarasa. लेकिन वैकुंठ में वो कभी भी इस रस का आस्वादन नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो भक्तगण हैं वो सभी उनको दास या शांत रस में ही सेवा करते हैं. And now we are in the verse number 22. Before narrating it more in detail, now we have to see. So seeing the fight going on for a very long time without any end, Lord Brahma got little, he became little unhappy and he got little worried actually.
तो बहुत लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, युद्ध का कोई परिणाम नहीं आ रहा था। ये देख करके ब्रह्मा जी अब थोड़े वो सोच में पड़ गए, थोड़े निराश हो रहे हैं। So here the word is used beautifully. Vilakshadaityam Bhagavan Sagasranir Jagada Narayanam Adisugaram. So Brahma was able to see that the demon was fighting in an equal way to the Supreme Lord. ब्रह्मा जी देखा कि ये असुर भी भगवान के साथ में उन्हीं की बराबर शक्ति से युद्ध कर रहे हैं। So naturally he became little unhappy and he was little worried whether the Supreme Lord will win or not. तो थोड़े से वो अप्रसन्न हो गए कि, और उनके थोड़े मन में शंका आ गया कि क्या भगवान जीत पाएंगे, विजयी होंगे कि नहीं होंगे। So he started praying to the Supreme Lord in anxiety. और तब वो बड़े चिंता मग्न होकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। Yesade deva devanam angri mulam upayusham pranam sabrebiyanam bhudanam abhyangasham. Oh my Lord, he was a little bit motivating the Supreme Lord to kill him immediately. He is the pinprick for all the devatas, so please kill him immediately. तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप तुरंत ही इनका वध करिए, आप तत्क्षण इसका वध करिए, आप देवताओं के रक्षक हैं। Yeah, the suitable time Abhijit has arrived, so please kill him in this particular time. और अब ये अनुकूल समय आ चुका है, उचित समय आ चुका है, अभिजीत समय, कृपा करके आप इस मुहूर्त पर इनका वध कर दीजिए। So please kill him in this Abhijit time actually. तो इस अभिजीत जो ये मुहूर्त है, इसमें आप इनका वध कर दीजिए। The Supreme Lord was so much pleased with the prayer of his pure devotee, Lord Brahma. तो अब भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। Because the prayers were offered with prema, love, pure love. क्योंकि प्रार्थनाएं शुद्ध प्रेम से अर्पित की जाती हैं। And it were offered avadarya vrinjasya, vrinji means Brahma. It was offered by Brahma in nirvyaliham, without any pretense, without any cheating propensity. और बिना किसी ठगने की प्रवृत्ति से, बिल्कुल सरल हृदय से, सहज भाव से ये द्वारा ये प्रार्थनाएं प्रस्तुत की गई थी। It is also said prakasya prema garbena tat abangena swagraha. The Lord with a vision of with a vision laden with love looked at Brahma and accepted that prayer. और भगवान ने भी बड़े प्रेम पूर्वक नेत्रों से ब्रह्मा की ओर देखे, जैसे कि उन्होंने उनके प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। So now the Lord decided to kill demon Hiranyaksha. और अब भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब वो हिरण्याक्ष का वध करेंगे। Because his pure devotee, he wanted to subdue the anxiety of his pure devotee, Lord Brahma. क्योंकि वो अपने शुद्ध भक्त जैसे ब्रह्मा जी, उनकी चिंताओं को दूर करना चाहते थे। But again, in this portion of Srimad Bhagavatam, Acharya gives elaborate commentaries why the Lord delayed so much in killing and the demon Hiranyaksha. तो यहाँ पर आचार्य लोग बड़ी विस्तृत टीका देते हैं कि क्यों भगवान ने अब यहाँ पर निश्चय किया उनको मारने के लिए। The same thing, the Lord of Vaikunta, he wanted to release his fighting spirit for a long time. क्योंकि भगवान वैकुंठ के जो भगवान वैकुंठपति हैं, वो लंबे समय तक इस वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। In Vaikunta, he cannot fight with anybody at all because everybody does service in the mode of dasya. क्योंकि वैकुंठ में वो युद्ध नहीं कर सकते सबके साथ में, वहां पर सभी लोग दास भाव में सेवा कर रहे हैं। So that is the reason he made an arrangement in such a way that this Jai Vijay, they fell down within this material world and assumed 3 demonic forms in 3 different births. इसलिए ऐसी योजना बनाई भगवान ने कि जो जय विजय, जो उनके नित्य पार्षद हैं द्वारपाल, वो इस जगत में आकर के और 3 बार 3 अलग अलग जन्मों में, वो 3 अवतारों में उनको इस वीर रस का आस्वादन प्रदान करेंगे। So in the Vaikunta, most of the liberated devotees, they have Sat Aishwarya hai. They have all the opulences equal to the Lord. वैकुंठ में सभी लोग के पास भगवान के समान ही ऐश्वर्य है। So if one wants to enjoy his fighting spirit, he has to fight with a equal opponent. और वहां पर अगर वो उनका आस्वादन करना भी चाहते हैं वीर रस का, तो अपने से बराबर ऐश्वर्य वाले के साथ में युद्ध करना होगा।
then only we can enjoy the fighting spirit. और तभी हम इस वीर रस का आस्वादन कर सकते हैं. If you are fighting with a person who has very lesser strength than ourselves, we cannot enjoy the fighting at all. अगर हम किसी युद्ध कर रहे हैं और वो हमसे बहुत कमजोर है, तब युद्ध का आनंद नहीं आता है. Here, in this section of Srimad Bhagavatam, we can see that when the demon attacked the Supreme Lord, the mace from the Supreme Lord also fell down. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भगवान के साथ में युद्ध कर रहे हैं हिरण्याक्ष, तो भगवान का भी गदा गिर गया था. Because what is the reason? Because Hiranyaksha also equally powerful to the Supreme Lord in the matter of fighting. तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हिरण्याक्ष भी भगवान के समान ही शक्ति वाले हैं इस समय युद्ध में. Of course, we know that Hiranyaksha got that power by the mercy of the Supreme Lord only. तो हम जानते हैं कि हालांकि हिरण्याक्ष के जो शक्ति है उसके स्रोत भी भगवान ही. But at the same time, he was empowered in a equal way so that the Lord can enjoy the fighting with him actually. लेकिन भगवान ने उनको समान शक्ति प्रदान कर रखी थी, जिससे कि उनको जब युद्ध करे तो उनको भी आनंद आए भगवान को. If the Lord win him instantly, definitely there is no releasement of fighting spirit by the Lord. कि अगर भगवान तुरंत ही जीत जाएंगे तो फिर उनको वीर रस का लंबे समय तक युद्ध करने का आनंद प्राप्त नहीं होगा. So naturally, Acharya has explained in this particular portion that the Supreme Lord's weapon fell down from his hand. So it is not a point of defamation. On the other hand, it is one of the glory of the Supreme Lord. तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के हाथ से गदा गिरना ये कोई अपयश नहीं है, बल्कि ये उनका यश दिखाता है. Then, because since Brahma prayed, the Lord wanted to kill him immediately. और चूंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर दी थी, तो उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान तत्क्षण ही उनका वध करना चाहते थे. So the Lord called for his Sudarshan Chakra. भगवान ने सुदर्शन चक्र को आह्वान दिया. And he went near the demon Hiranyaksha. और हिरण्याक्ष असुर के पास में गए. And he healed Hiranyaksha. और हिरण्याक्ष का वध कर दिया. So Hiranyaksha fell down. वो गिर पड़े. But at the same time, his appearance looked very effulgent even after death also, since he was killed by the slap of the Lord. Sometime it is said that he was killed by the Sudarshana Chakra of the Lord. तो कहीं कहीं में बोला गया कि उनके भगवान के एक झापड़ से ही उनकी मृत्यु हो गई, और कहीं कहीं में बताया गया कि सुदर्शन चक्र के द्वारा. लेकिन जैसे ही वो गिरने के पश्चात भी उनके शरीर से बड़ी अच्छी आभा निकल रही थी, क्योंकि भगवान के द्वारा उनका वध हुआ था. So this pastime of Varaha Dev is so much important because we have discussed this point so many times. The Lord appears within this material world as an incarnation, especially for the protection of Mother Earth. जैसे कई बार हम श्रवण कर चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वराह अवतार भगवान के हैं, क्योंकि भगवान समय समय पर कई बार भूमि माता की रक्षा के लिए, उनका उद्धार करने के, उनको बचाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं. Just like we discussed in one lecture in Kanayades that why Shiva does not make so many different incarnations within this material world. Because since Mother Earth is the wife of Lord Vishnu, out of affection for his wife, Vishnu appears so many times. Shiva does not appear so many times as incarnation. तो प्रभु जैसे बताया था पहले भी कन्या देश में कि शिव जी बार बार प्रकट क्यों नहीं होते हैं और अलग अलग अवतार लेकर के, क्यों भगवान विष्णु ही आते हैं? क्योंकि भूमि माता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए. And many devotees are attracted by the personality of the Supreme Personality of Godhead by hearing his fighting pastimes also. और बहुत से भक्त भगवान के वीर रस की लीलाओं को सुन करके आकर्षित होते हैं, इसलिए भगवान आकर के वीर रस दिखाते हैं. So the Supreme Lord exhibited so much of fighting spirit in the Leela of Ramayana also. और वही भगवान जो जब आते हैं राम जी के रूप में, तो रामायण में बहुत अपने वीर रस का उन्होंने वीर रस का प्राकट्य दिखाया है. So especially our Acharya Madhvacharya
has given a very detailed descriptions of these fighting pastimes of Ramayana in his book Ramayana Tatparya Nirnaya. तो श्री माधवाचार्य जी ने बहुत विस्तार रूप में रामायण तात्पर्य निर्णय में इसके बारे में बहुत सुंदर व्याख्या की है. So in India we have so many famous temples of Lord Varaha still now. Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. In Yeah, India, Prabhu, I still lost Prabhu in between. I could not hear okay, Prabhu. no problem. In India, still we can see so many important temples of Lord Varaha scattered in different parts of India. तो भारतवर्ष में अन्य अलग अलग स्थानों पर अभी भी हम वराह देव के बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों को देख सकते हैं. The famous Balaji temple, the 7 hills of Balaji, actually originally there first Lord Varaha was there. तो जो 7 पर्वत हैं, सप्त पर्वत बालाजी के वहां पर सबसे पहले शुरुआत में आरंभ में वहां पर वराह देव ही थे. Still one can see that particular Varaha temple near the Puskarani in the top of the hill. अभी भी पुष्करणी के पास में वहां पर वो विग्रह हम देख सकते हैं. So in Mathura, still we can see the famous Adi Varaha temple in Mathura, near the Dvaraha, this temple in Mathura. और मथुरा में द्वारकाधीश जी के मंदिर के पास में आदि वराह देव का मंदिर है. And the famous South India Sri Mushram, the place visited by Lord Chaitanya, there one can see the same Vyakta Murti, the Murti which appeared spontaneously, Varahadev temple in Tamil Nadu. तमिलनाडु में श्री मुष्टम जहां चैतन्य महाप्रभु ने भी भ्रमण किया था, दर्शन किया था, वहां पर स्वयं भू विग्रह हैं वराह देव के. We all Kannada devotees visited that particular temple a few years back in our South Indian Yatra. और प्रभु जी की कृपा से प्रभु जी के निर्देशन में कन्यादेश यात्रा गई थी वहां पर और वो मंदिर का दर्शन किए थे हम सब. And we all visited the famous Varahadev temple near Kurma Kshetram, Kurma Varahadev, in the border of Orissa, Andhra Pradesh also. और कुर्म क्षेत्र में भी हम सब ने प्रभु जी के साथ में ही उनके सानिध्य में हम सब ने श्री वराह देव का बहुत सुंदर दर्शन किया था. Of course, still there are so many Varahadev temples in different parts of Tamil Nadu and in Kerala states also. और अभी भी बहुत से केरला और तमिलनाडु के स्थानों पर वराह देव के बहुत सुंदर सुंदर विग्रह हैं. So when we get time in the future, we can visit the famous Varahadev temples in the state of Kerala also. भविष्य रहेगा तो हम लोग केरला में भी जाकर के प्रभु के साथ में और भी वराह देव के जो मंदिर हैं, विशेष मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं. In Orissa also, in some other places also, there are some famous temples of Varahadev. उड़ीसा और भी अन्य स्थानों पर बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं वराह देव के. So we will pray to the lotus feet of Lord Varahadev so that we will develop the mood of doing sacrifice and dedicating ourselves to the lotus feet of Lord Sri Krishna. तो हम सब श्री वराह देव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए आज उनसे प्रार्थना करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग की तीव्र भक्ति जो है, आकर्षण भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़े. He appeared for the purpose of proving the fact that Bhumi Mada belongs to him, not to anybody else. And our question is only eternal servant of his Supreme Lord. तो प्रकट हुए थे दर्शाने के लिए कि भूमि माता भगवान की ही संपत्ति है और किसी की नहीं, और हम लोग उनके दास के रूप में हैं. So in future, when we get time, we can discuss very detailed about that Ninda Bhaksha prayers of Diman Hiranyaksha, how it is actually Stuti Bhaksha. तो भविष्य में कभी समय मिलेगा तो प्रभु जी करें हम लोग वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के इस
कि हृणाक्ष की जो प्रार्थनाएं हैं जो लगता है कि निंदा पक्ष है और कैसे वो स्तुति पक्ष में आचार्यों के द्वारा बताई जाती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।